Good morning, students. Now discuss dot product. Dot product means scalar product. Yes, beta. Now discuss A dot B. These are two vectors. This is written as B dot A. That means A and B are commutative. Next is cos theta. Theta is the angle between the vectors. That means A dot B upon modulus A modulus B. Next point. If vector A is perpendicular to vector B, that means A and B perpendicular means angle is 90 degree, cos 90 is 0 degree. Therefore, A dot B equals to 0. Next point. If vector A parallel to vector B, that means vector A is lambda times of vector B. Next point, if A dot A, same vectors जब मल्टीप्लाई होते हैं, that means मॉडुलस का स्क्वायर हो जाता है. Sixth, projection of vector A on vector B. A dot B upon modulus B. This is vector A or unit vector of B. 7th point. Projection of B vector on A vector. जिस पे भी प्रोजेक्शन होता है उसका यूनिट वेक्टर आता है. A dot B upon modulus A means A unit vector dot B vector. Next point. This is the unit vectors. X-axis, Y-axis, Z-axis. This point is O. This is P. I, J, and K. These are the unit vectors along x-axis, y-axis, and z-axis. I dot I, J dot J, and K dot K. These are same. This one is 1. I dot J, J dot K, and K dot I. This one is 0. Is it clear? Okay. Now discuss the questions. Example number 13, page 444. Find the angle between the A and B with magnitudes 1 and 2. Magnitudes 1 and 2. And A dot B is given 1. Now the angle. Formula of angle, first of all write down the formula. A dot B modulus A modulus B. This is 1 dot 2, that means 1. 1 upon 2 is 60. Therefore, theta is pi by 3 is the answer. Next question. Next question is example number 14. If vector A equals to I plus J minus K, vector B equals to I minus J plus K, find the angle between them. अब बेटा इन दोनों में एंगल निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट A डॉट B. A डॉट B I को मल्टीप्लाई कर दीजिए, J को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स -1. मॉडुलस A
1 plus 1 plus 1 root 3. Modulus b 1 plus 1 plus 1 root 3. फॉर्मूला लगाइए cos थीटा का a डॉट b modulus a modulus b. This is minus 1 root 3 root 3. This one is equals to minus 1 upon 3. Theta equals to cos inverse minus 1 upon 3 is the angle. Next question. Example number 50. If a 5i minus j minus 3 b I plus 3j minus 5. Show that a minus b and a plus b are perpendicular. First of all, calculate a minus b. a में से b को माइनस करिए 4i माइनस 4j प्लस 2k. इन दोनों को ऐड कर दीजिए 6i 2j माइनस 8. अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए. If dot product is 0, that means these are perpendicular. 4 6 are 24, 4 2s are 8, 8 2s are 16. This is 0. That means a minus b perpendicular to a plus b. Is it clear? Proved. Next. Example number 16. Find the projection of A. A is 2i 3j plus 2k and B equals to I plus j 2j plus k. Find the projection of A on B. Projection of A vector on B vector. Formula is A dot B modulus of B. A dot B is 2 plus 6 plus 2. Modulus B करना है, इसका मीनिंग B का स्क्वायर कर लीजिए 10 upon root 6. This is the इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए रूट 6 अपॉन रूट 6 10 रूट 6 अपॉन 6 2 5 and 2 3. This one is the answer. Next question. Example number 17. Find modulus a minus b. This one find if modulus a2 modulus b 3 a dot b 4. बेटा जब भी कभी मॉडुलस निकालना हो तो नाउ मॉडुलस a minus b whole square means a minus b dot a minus b. ओपन करिए मॉडुलस a dot a dot b dot a प्लस b dot b. सेम का मॉडुलस होने पर उसका स्क्वायर हो जाता है. दिस इज 2a dot माइ प्लस मॉडुलस b का स्क्वायर. इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 4 प्लस 9 13 माइनस 8. 13 माइनस 8 कितने हुए 5. तो a डॉट b
आएगा नहीं. Is it clear? Okay. Next, example number 18. X minus a, x plus a equals to 8. Find modulus x. This one means modulus x square minus modulus a square equals to 8. Modulus x square, and this modulus a is unit vector. This one is 1. क्या लिखा हुआ है? A is a unit vector. तो मॉडुलस x की वैल्यू 9 आ गई. मॉडुलस x is 3. प्लस माइनस में आंसर नहीं है. नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 21. Example 21. If ABC are 3 points, minus 2i, 3j, 5k, B, I plus 2j plus 3k, C, 7i minus k. Show that these 3 points are collinear. Collinear means lie on a straight line. This one means, first of all, calculate AB vector. AB means OB minus OA. आप इसमें से इसको माइनस करिए. 3i minus j माइनस इसमें से इसको माइनस करिए तो माइनस 2. AB वेक्टर. AB के बाद आप निकालिए BC वेक्टर. BC, OC माइनस OB. अब इसमें से इसको माइनस करिए. 6i माइनस 2j एंड माइनस 4k. AB निकाला, BC निकाला, अब निकालिए आप AC वेक्टर. OC माइनस OA. OC में से OA, इसमें से इसको करिए 9 माइनस 3, इसमें से इसको करिए माइनस 6. तीनों के मॉडुलस निकालिए. AB का मॉडुलस 914, that means root 40. मॉडुलस ऑफ BC निकालिए. 36 4 plus 16, ये कितना आ गया? 40. 56. अब 56 कितना होता है? 8 7 जा 56. 8 7 जा 56. 8 का मतलब हो गया 4 4 14 का 4 7 का. ठीक है. नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ CA. CA या AC एक ही बात है. 81 9 36. अब आप इसे ऐड करिए. 90, दिस इज 126. 126. 3 root 14. That means AB plus BC equals to CA. Therefore, A, B and C are collinear. Is it clear?